Welcome to my students, means dear students. Today we will switch over to a new chapter. It is your depreciation. Depreciation is a term. It should be used in the business cases, and you know depreciation is a term which derives from Latin word, that is depreciation. D-E, it means decrease. Pretium, it means price or value. Means decrease in the value of assets is your depreciation, and depreciation is a term. Specifically, it is used for fixed assets. Either it is tangible or intangible or wasting. But the term differs from considering the nature of the asset, like tangible assets, tangible fixed tangible assets, fixed intangible fixed asset, tangible fixed assets, wasting assets. Different term is used. The depreciation, D means decrease, pretium means price or value. That means decrease in the value of fixed assets due to wear and tear, due to any use, due to any cause, due to use is known as depreciation. Means, in other words, we can say that gradual, or you can other way you can say permanent or gradual decrease in the value of fixed assets is known as depreciation. Remember this one. Permanent or gradual decrease in the value of fixed assets is known as depreciation. In other words, we can say the simple word, that means decreasing value of assets, fixed assets due to wear and tear, due to use or due to any cause is known as depreciation. Means in different way you can say, we can describe it in details. Whenever we use a particular fixed asset for a considerable period, obviously the value decreases because of different reasons. So as we use an asset day after day, period after period, gradually the functional capacity also decreases. It loses its functional capacity, it loses its lusting power, it loses its ether parts of the wear and tear. As a result, the market price of such asset decreases day after day. Whether to be used or not used, if you don't use an asset for a considerable period, it also decreases, because for the time being, it also the value decreases period after period or day after day. That means D, it derives the depreciation, it derives from the Latin term depretium. D means decrease, pretium means price. Now see, depreciation, whenever we use different types of assets, and business is a state of being busy, and the continuity of the business depends upon the possession of different types of assets. That means a business must possess different types of assets depending upon the nature of the business activities. As a business possesses different types of nature of fixed assets, like land and building, plant and machinery, furniture and fixture, livestock, vehicle, different types, etc. These are the fixed tangible assets. Like intangible assets, goodwill, patents, copyrights, technical know-how, trademark, brand. These are the examples of intangible fixed assets. And side by wasting assets, you can say, already we have discussed this type of example in first year and also in the final account. Wasting assets, that means it relates to natural resources like mines, quarries, oil well,
forest, etc. These are the assets normally purchased by a business enterprise or business concern, depending upon the nature of the activities. And whenever a business purchases different types of assets, fixed assets, and these are being used in the business, and as such type of assets are being used in the business, obviously or naturally, normally the value decreases. As the value decreases, the value so decrease should be taken into account, because without depreciating an asset, it is difficult to find out the actual price of the asset to know the financial position of the business. That is why the depreciation should be charged, and it is mandatory in each and every business undertakings, business concern, business units. So depreciation, it is a term very common in the business, and already we have given a basic idea in the first year classes, and side by side in the also in the second year classes like final account, and also in your non-profit making organization. And now this is a new chapter you have to touch. You have to learn, because this chapter very easy, no doubt. Simply you have to go through the books and come to the background knowledge of the depreciation, and I will try to teach you in better way so that you can understand very well. So depreciation, it is applicable to fixed assets. It is applicable to fixed assets. The fixed assets may be tangible, may be intangible, or wasting assets. Fixed assets are three types, that is tangible fixed assets, intangible fixed assets, wasting assets. Tangible fixed assets, which we can see and touch, such assets show the feasibility of the business, and such assets have unique shape, size, which we can see and touch. And as these assets are used by the business undertakings, business units, that is why these assets should be depreciated, because of the gradual reduction in the value of such assets due to use or wear and tear or any cause. Tangible assets, that is land and building, plant and machinery, furniture and fittings or fixtures, vehicles. These are the examples of the tangible fixed assets. Intangible fixed assets, you can say goodwill, patents, copyrights, technical know-how, your trademark, brand. These are the examples of intangible assets. Fixed assets. Wasting assets, purely it is related to natural resources like oil well, your quarries, mines, forests. And whenever these assets are being used by a business undertaking, naturally the value decreases. As the value decreases of different types of assets, that is why we have to calculate actual the depreciation. Okay. Now the question is, no, causes of depreciation. What are the causes of depreciation? Means कहीं गोटे फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट करा जाए बा ताकू माइनस करा जाए, ता वैल्यू को डिक्रीज हेले कहीं ता वैल्यू को माइनस कर दिया जाए, तेणु को कारण पाई गोटे वैल्यू डिक्रीज करी थाए, गोटे एसेट वैल्यू डिक्रीज करते, तो कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ वी कैन से दैट इज नंबर 1 इज योर wear and tear, number 2 aging, number 3 is your depletion, number 4 accident, number 5 is your natural
causes. Number 6, scale of production. Another one is your number 7, that is effects of time. Number 7 over number 8 is your obsolescence. Obsolescence. So these are the causes of depreciation. First one. Now one by one we will discuss and चेष्टा करूची तुम केते सहज बुझी परिबो एही कारण पाई हमर गोटे एसेट रो वैल्यू डिक्रीज करि थाए बा हम डेप्रिसिएशन चार्ज करि थाउ. फर्स्ट वन इज वियर एंड टियर. सिंपली ओडिया क्षय होवा, क्षय प्राप्त होवा. सो व्हेनेवर वी यूज एनी मैकेनिकल items and whenever it is used for a considerable period, no doubt some parts of the concerned asset decreases, means it loses its functional capacity because of wear and tear, like ball bearing where there is friction is being done. जो जगह घर्षण शक्ति ही थाए, जो जगह घर्षण हुए से जगह निश्चित भाव में मेकानिकल इक्विपमेंट्स जो पार्ट्स अच्छी तार निश्चित भाव में किसी क्षय प्राप्त हुए. जो क्षय प्राप्त होला आ द्वारा कौन हुए ना द कंसर्न एसेट लुजेस इट्स फंक्शनल कैपेसिटी. As it loses its functional capacity, it can't work properly as it was being done in before. That is what wear and tear ओडिया कहते क्षय प्राप्त. जेहेतु आम मेसीन बा कौन से कंसर्न एसेट को आम व्यवहार करें धीरे धीरे कौन हुए ना क्षय होता है. क्षय होगा द्वारा तेणु तार भैल्यू कमी थाए. As a result, as the value decreases because of wear and tear, naturally we have to provide depreciation on the concerned assets. Second one is your aging. Very simple. Aging, no doubt it is applicable for non-living items but also living items, living assets. Example, you can say your first year already तुम पढ़ाई थी गोटे टर्म पढ़ाई थी लाइवस्टॉक डायरी फार्म आम करें तो नेचुरली आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क काउज आम रखिक डायरी फार्म कर तो अदर से किसी अच्छी लाइफ स्टॉक जहाँ को लेकर आम बिजनेस कर तेणु फास्ट ऑफ ऑल लाइफ स्टॉक जो तार यंग एज रे से जो ढंग कार्य करमती हाथी हो घोड़ा हो बा किसी गाई है ओट है एमाने जिते से यंग स्टेज रे जो परिमाण में से कार्यक्षम होती जो ढंग से कार्य करती जिते धीरे धीरे बयस गड़ी गड़ी चले से वृद्ध को पलि आसती समय पूरा पलि आसी थाए वृद्ध केस को पलि आसी ओल्ड एज को पलि आसी थाए से ढंग से कार्य करपारती ना जहाँद्वारा से फंक्शनल कैपेसिटी हरइले तो मार्केट रे डिमांड कमी जाए. तो मार्केट जेहेतु ये डिमांड कमी जाए से परिमाण से कार्यक्षम हो पारती तेणु से बयस अधिक जो ओल्ड एज जो से ढंग से कार्य करपारती से आम तार मूल्यटा को काटी काटिका जाओ मूल्य को कमी कमिका जाओ. ये तुम लिविंग बीइंग्स केस रे नॉन लिविंग बीइंग केस रे आम हो घर भी हो पार तुम बिल्डिंग जोटा आम कहूँ बिल्डिंग है प्लांट है मेसीनरी है फर्निचर्स है अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स आज द डे प्रोसेस डे वन बाय वन डे आफ्टर डे तुम जो समय जिते अधिक हो जाऊ धीरे धीरे से प्रकार आसेट तार फंक्शनल कैपेसिटी हरई थाए तार लस्चरिंग पावर हरई थाए तार अदर जो आई कैचिंग जो मार्किंग आई कैचिंग पॉइंट जो थाए सेटा हरई थाए. तो निश्चित भाव किसी ना कि भांगी भुंगी जाए तो ये नजर रखिले निश्चित भाव एजिंग हेले तो गोटे आसेट्र फंक्शनल कैपेसिटी हरई थाए. से आम एजिंग को गोटे पॉइंट रूपे कंसीडर करें एंड व्हिच इज ए पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, नेक्स्ट वन इज डिप्लेशन. डिप्लेशन इज ए टर्म व्हिच इज ए यूनिक टर्म एंड इज मोस्ट सिमिलर टू डेप्रिसिएशन. Depreciation is charged on
tangible fixed assets, whereas depletion is a term which is specifically used in case of wasting assets. Remember, students, my dear students, remember this one. Depreciation is a term is used in case of tangible fixed assets. Depletion is a term which is used in case of wasting assets, means natural resources, meaning same, but the term is used in different cases depending upon the nature of the assets. Depreciation, depletion meaning same, केवल आमे assets रो nature को judge करके आमे term टा यूज करता हूँ. तो whenever natural resources is used and you know natural resources or wasting assets, the assets which are used only once is exhausted forever. Once a particular natural resources is used is exhausted forever. Natural resources को थरे व्यवहार कले सेटा सब दिन पाई forever सेटा सॉरी एडजस्ट हो जाय थाए सॉरी जाय थाए आमे सेकंड टाइम से एसेट को आमे यूज करि पारि न थाउ. तो सेति पई आमे से वेस्टिंग एसेट पई आमे डिप्लेशन टर्म टा को आमे यूज करि थाउ. नेक्स्ट वन इज एक्सीडेंट, वेरी कॉमन, वेरी इजी. यू नो एक्सीडेंट once, whether it is a new asset or old asset, whatever may be the position, whatever may be the status of the asset, it is immaterial. Once an asset meets an accident, it suddenly loses its functional capacity. Remember this one. कौनसी एक asset जेकोसी स्टाटस रे थाउ, से नुआ हो कि पुराना हो कि जो स्टाटस रे थाउ, हठात जदि से कौनसी एक्सीडेंट फेस करे तो इमिडिएटली से एसेट रो फंक्शनल कैपेसिटी सडनली डिक्रीज करि जाय. जेतो सडनली डिक्रीज कला तो वैल्यू मत डिक्रीज कला. जेति की परिमाण रे वैल्यू डिक्रीज कला आमे ताको डेप्रिसिएशन पे चार्ज करथाउ. काहे कि ना एक्सीडेंट इज ए टर्म, इट लूजेस इट्स फंक्शनल कैपेसिटी सडनली. दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सच एसेट. जोड़ा कि आशा करा देलो तार यथेष्ट परिमाण एसेट रो वैल्यू डिक्रीज करि थाए. जेहेतु एक्सीडेंट वैल्यू डिक्रीज करूची तो एक्सीडेंट इज ए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, नेक्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेस. नेचुरल कॉजेस मींस वेदरिंग. पानी पाग, खरा, वर्षा, शीत, काकर आर मध्य एसेट ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़े. तेणु से इंपैक्ट पड़वा द्वारा गोटे एसेट तार क्वालिटी हराई थाए. प्रथम जिनस कि क्वालिटी हरइब कहीं गोटे नुआ गाड़ीटे तुम सालाइन वेदर यूज कर एट द सेम डेट से आउ गोटे नुआ गाड़ी को तुम गोटा भल जगह अलग जो सालाइन वेदर न फ्रेश वेदर थी से जगह यूज कर. दुई जन को डिफरेंट प्लेस यूज कर. निर्दिष्ट समय पर दुईटा गाड़ी पानी रखिदिव. निश्चित भाव में देख सालाइन वेदर रे यूज होता आसेट्र लस्चरिंग पावर मीन्स ग्लेजनेस जो चिक करे जो आई कैचिंग देखाए से प्रकार जिनिस केबे भी सालाइन वेदर रे रहिबो नाही. एग्जांपल भुवनेश्वर रे गोटे गाड़ी व्यवहार करा जाउची. सेम डेट रे गोटे गाड़ी आमे किडी जदि आमे ताको नेकरी से किछि पीरियड पय आमे पारादीप एरिया रे यूज करबा. पारादीप रे उनो सालाइन वेदर समुद्र रो प्रभाव वायु रो प्रभाव रे से सालाइन वेदर रे लुहा गोटे शीघ्र से माने कोन करंती लुहा गोटे तार जो कलंकी लागि थाए रस्टिंग हुए. रस्टिंग हवा द्वारा लस्चरिंग पावर हरैला चकचक करुवा जिनसा हरैबो. व्हेराज भुवनेश्वर यूज होता गाड़ी तार से लस्चरिंग पावर हरैना थाए. तो आ द्वारा कोन हुए ना ए नेचुरल कॉजेस ये हला वेदरिंग आसिला. अनदर वन इज खरा रे किछि दिन रख गाड़ी जदि नॉन्स बहुत दिन पर्यंत आमे खरा रखिबा निश्चित भाव देखो तार कलर ग्लेज कमी जाए. वर्षा रे रख वर्षा रे बहुत समय गाड़ी उदा हुए निश्चित भाव देखो तार ग्लेज हराई थाए. किछि पार्ट्स मध्य रस्ट लगी थाए जेहेतु इट इज मेड ऑफ आयरन. मोस्ट पार्ट ऑफ दी पार्ट्स ऑफ दी व्हीकल इज मेड ऑफ आयरन. तेणु आयरन प्रभाव पड़ी ऑक्साइड फॉर्मेशन हुए. ऑक्सीडेशन माध्यम तार वैल्यू डिक्रीज करे कारण कलंकी लगी जाए. ये आसला नेचुरल कॉजेस. खरा, वर्षा, शीत, काकर एगुड़े पवन आपरे प्रभाव ये गुड़े आसेट उपर प्रभाव पड़े निश्चित वैल्यू डिक्रीज करे. कारण यू नो आम गोटे बिल्डिंग तैयारी कले आज डेट रे जो बिल्डिंग तैयारी करछे 20 वर्ष पर देखिबो से बिल्डिंग रो स्टाटस सेया न थाए. निश्चित भाव में कौन जगह किसी बिल्डिंग रो वैल्यू डिक्रीज करते कहीं ना 20 इयर्स भितर
वेदर इम्पैक्ट पड़ी खरा वर्षा शीत खाई देखो तार कलरटा हर जो सीमेंटिंग करा प्लास्टर हो सेगुड़ा किसी छाड़ी जाए कलरटा हर थाए तार जो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ से हर थाए तो से हूँ नेचुरल कजेस जहाँपाई तार फंक्शनल कैपेसिटी तार ग्लेजनेस लस्टरिंग पावर ये जिन हर थाए नजर रखिले तो निश्चित भाव में नेचुरल कजेस इज ए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. Okay, next one is your efflux of time. It is efflux of time. It is specifically used to in case of leasehold premises. पहले पढ़ाई थी freehold premises, leasehold premises. Freehold premises means building, apartment. Freehold premises means the building which that building the ownership vested with the owner. Ownership vested with the business. That means तार मालिकाना सत्व तुम निज ना इट इज फ्री होल्ड प्रिमिसेस निज घर बा बिजनेस निज घर निजे से व्यवहार कर. इन केस ऑफ लीज होल्ड प्रिमिसेस मीन्स यू लैंड कोई परिबा बिल्डिंग कोई परिबा एनी अदर एसेट्स व्हिच आर नॉर्मली यूज्ड फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सन दैट ओनरशिप इज वेस्टेड विथ द अदर पर्सन एंड इट इज यूज्ड बाय अस और यूज्ड बाय आवर बिजनेस. आमे कोनोसी घर बा कोनोसी बिल्डिंग भी कहि परिबा बा कोनोसी एमिति वेहिकल मध्ये आमे कहि परिबा जहा को आमे भडा राणी व्यवहार करिथाउ. तनु गोटे टाइमिंग रे आमे ताको गोटे लीज सूत्र रे आमे 5 वर्ष पई वर्षक पई 2 वर्ष पई आमे गोटे एसेट को आमे लीज रे नै आसतो भडा सूत्र नै आसतो एवं तार गोटे कंसीडरेबल प्राइस फिक्स हेता यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट विद इन दिस पीरियड. लेट एग्जांपल मु गोटे गाड़ी तम ठार लीज रे नै आसली 10 इयर्स पई तो 10 इयर्स भितर सहित मोर नेगोसीएसन है जे मते 10 इयर्स भितर मते 5 लाख दबा पड़ो फाइनाल हल 10 इयर्स भितर मते से एसेट को व्यवहार करके मते किसी इनकम करिवार अछि. आइदर तुम यूज कर 10 इयर्स आनी तुम घरे ताको जदी रखी नबो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 10 ईयर यू हैव टू पे 5 लाख आइदर इट इज बीइंग यूज्ड और नॉट. दैट मीन्स as the time passes the value also decreases of such assets. Means सेतिक परिमाण पैसा तुमको दबा पई पड़ो. तो जेतिक परिमाण पैसा तुम देलो इफ्लक्स ऑफ टाइम मीन्स पासेस ऑफ टाइम जेतिक पैसा दउछो बा कंसीडरेबल नेगोशिएशन हेताय तांको बिजनेस एवं से थर्ड पार्टी सहित तुम ताते तुम जेतिक पैसा दबा पड़े सेटा ही टाइम पास ऊपर निर्भर करछि. आमे जदि गोटे मास गोटे घर आमे व्यवहार करूने फिर भी हमको लैंडलॉर्ड को भड़ा दबा पई पड़ुछि. तमे व्यवहार करो कि न करो. आजिका समय जो लॉकडाउन पीरियड है देखी तो बहुत घर एमती भड़ारे रही किसी भी व्यवहार हो पारनी फिर भी जे टेनांट जे भड़ारे नहीं से लैंडलॉर्ड को पैसा दौर जेहेतु सहित आम नेगोसीएसन है वर्षक घरटे नहीं तेना वर्षक पर्यंत तुमको भड़ा दबाक ही पड़ो. आइदर इट इज बीइंग यूज्ड और नॉट दैट इज इमैटेरियल. इट इज योर इफ्लक्स ऑफ टाइम और पासेस ऑफ टाइम. So whatever value that you have to pay within this period or whatever the value that decreases as the time passes period after period, this is a term of efflux of time, is a cause of depreciation. Next one is your obsolescence. Obsolescence is a term specifically it is used in case of intangible fixed assets. Remember this one, it is specifically used for intangible fixed assets. Intangible fixed assets, goodwill, patent, copyrights, technical know-how, these are the different examples of intangible fixed assets. Assets which we can't see and touch, only we can feel. Those such assets don't have any type of feasibility, but such assets play a vital role in the day-to-day activities of the business. Nowadays, without possessing any type of intangible assets, it is difficult to run your business and sustain your business in the market. Nowadays, minimum depending upon your nature, depending upon your capacity, you have to possess different types of intangible fixed assets. Obsolescence is a term, and as it is a cause of depreciation because science is developing, and nowadays science is developing day after day, changing its scenario day after day. Today we have a particular technology, just after 1 day 2 day the technology changes and a new technology is introduced.
That means we are in a old technology and it is in a functionable condition. Remember this one. We are using a particular technology and it is in a functionable condition and we use it continuously. Whenever a new technology is introduced in the market, no doubt the new technology is more faster than the old technology. And whenever such type of a new technology introduced with the new facilities, obviously the old technology becomes unused. It is the phenomenon of the business. It is the mentality of the businessman. Immediately the businessman adopts the new technology and discard the old technology. Though the old technology has its functional capacity, but due to introduction of a new technology, we discard the old technology. So whenever the old technology is discarded because of introduction of a new technology, the whatever value so decreases in case of old technology is known as obsolescence. Remember this one, obsolescence. New technology adapt कले हमर ओल्ड टेक्नोलॉजी को आमे हटाई दे थाउ जदियो से कार्यक्षम थाए किंतु आमे ताको कोन करथाउ ना न्यू टेक्नोलॉजी आनिबा उद्देश्य रे ताको आमे डिस्कार्ड करथाउ हटाई दे थाउ कारण ओल्ड टेक्नोलॉजी अपेक्षा न्यू टेक्नोलॉजी रो फंक्शनल कैपेसिटी बहुत भलो निश्चित न्यू फैसिलिटीज अवेलेबल थाए सेति पय ओल्ड टेक्नोलॉजी को आमे डिस्कार्ड करथाउ बेस्ट एग्जांपल पिले तमे बहुत वेल नोन एबेकार समय आजिका समय आमे जो स्मार्टफोन यूज करछे देखो स्मार्टफोन टाइम टू टाइम डिफरेंट तार भर्सन सब चेंज होची तले न्यू भर्सन आसुची मोबाइल रे निश्चित तार एप्लीकेशन निश्चित भलो आसीता आमे कोन करथाउ ना पुराना भर्सन को हटे देथाउ नुवा भर्सन को आपणे थाउ किंतु जो पुराना भर्सन को हम आपणे हटे देथाउ से पुराना भर्सन रे जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थाए तार मते फंक्शन थाए कार्यक्षम थाए कार्य करू थाए फिर भी आमे चाहतो किछि न्यू फैसिलिटीज जहा द्वारा ओल्ड टेक्नोलॉजी लोकन द्वारा आदृत होई न थाए आदृत न होबा द्वारा obviously the value decrease करियो तो जति परिमाण value decrease कला आमे ताको गोटे cause पे काउंट कले means it is also a cause of depreciation એટલે this is your obsolescence okay next one is your sir these are the okay remember this one these are the causes of depreciation wear and tear, aging, depletion, accident, natural causes, scale of production, efflux of time, obsolescence. So these are to be remembered, and accordingly these are the points. And if you analyze these points, and it will be considered a long question, and it's maximum time it is asked in the exam. And what are the causes of depreciation? So whenever you are asked to describe the causes of depreciation as a long question 8 marks, you have to analyze, you have to remember this point, and accordingly in every point it should be described accordingly depending upon the meaning of the term. That is wear and tear, aging, depletion, accident, natural causes, scale of production, efflux of time, obsolescence. Remember this one and go through the books. You will find all these points in your books and thoroughly you learn it and come to the knowledge that what is the meaning of these points, and accordingly you have to remember. Okay, thanks.